दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां हादसा आज सुबह करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का बताया जा रहा है। इधर दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। डीसीपी उषा रंगरानी ने बताया कि आज सुबह करीब 5 बजे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर गेट नंबर 1 और 2 पर तक फैला हुआ शेड गिर गया, जिससे लगभग 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लगभग 6 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। सभी घायल व्यक्तियों की हालत स्थिर है। दिल्ली पुलिस, अग्निशमन, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। बता दें कि दिल्ली में आज तड़के सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। बारिश होने के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। In 15 years it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured. कोई ऊपर आ भी ना। डायरेक्टर कह रहा है कि थोड़ी सी देर सब्र करें। आप लोगों का समझता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा पब्लिक इशू। In 15 years it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves.
the ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured.